सरबजीत कौर, मनिका, पूजा, एकता मैनी, सुलभा सिंह, ये तीन तो एक ही स्कूल के हो गए। मनिका ठाकुर, आई डोंट रिमेम्बर विच स्कूल। पूजा शाह। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, मनिका जी, हाउ आर यू? sir, I am from Gandhinagar. यू आर फ्रॉम गांधीनगर? Yes, sir. अच्छा। Okay. मैम Kameshwar वीडियो क्यों नहीं Institute. खोलते आप लोग? या आपको सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी है सर्टिफिकेट के लिए और उसके बाद इसको ऑन करके और चले गए अपने दूसरे दूसरे कामों में? नहीं मैंने तो सर. पहले मैंने पहले देखा है, लोग बाग जाते हैं, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई तरकारी बना रहा है, कोई छौंक लगा रहा है। पूजा जी बता दीजिए, मैं तो ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। आपका ऑडियो 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 बंद है। Now is it clear, हाँ sir? जी, आ रही है आवाज। सर आई एम फ्रॉम हैदराबाद और ऐसी बात नहीं है सर, परसों भी मैंने मीटिंग अटेंड की आपकी थी। बात नहीं कर रहा मैम। आउट ऑफ 100 ओनली 10 आर देयर सीरियस टू अटेंड एंड लर्न समथिंग न्यू, टू ग्रो प्रोफेशनली। मैडम एक बात बताओ, आपके स्कूल में कितने टीचर्स होंगे? माइट बी 40-50 और समथिंग लाइक दैट। यस प्रिंसिपल सर। कितने बनेंगे इसमें से? एक या मैक्सिमम दो, दोज हु आर रियली सीरियस एंड डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन। बाकी तो ये है कि रिटायरमेंट तक तो पहुंच ही जाएंगे, प्रोविडेंट फंड का अपना एक चेक मिल जाएगा मोटा सा। रिटायरमेंट के बाद करना क्या है? मौजा मौजा। बिकॉज उनके अंदर एक आग नहीं है ग्रो करने की। आग है सिर्फ कि इंक्रीमेंट हर साल मिल जाए। देखते हैं ना कब तक। अगले साल देखते हैं इंक्रीमेंट किस बेसिस पे देती है पब्लिक। ये पब्लिक स्कूल वाले मैनेजमेंट, दे आर नॉट फूल्स। उनको पैसा बचाना है, और वो पैसा बचाने की तरीके जो है वो हम कंसल्टेंट ही बताते हैं कि सर जरा टीचर को बुला लो और 5 क्वेश्चन पूछ लो, 5 कौन से वेबिनार अटेंड करें, एक वेबिनार में से आप उसका क्वेश्चन पूछ लो। आता है तो लो जी वेबिनार, नहीं आता है जयराम जी की, यू हैव अटेंडेड ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट। और यू गो टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ जहां यू कैन prove your competency on the basis of certificate. Nobody, nowhere, nobody can challenge it. जब कॉम्पिटेंसी नहीं है तो दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। एनीवे, दिस इज 36। आई कांट वेट फॉर मोर टाइम एंड लेट मी स्टार्ट। कल yesterday we people finished up to one particular point, that is feeder effect. Can anybody recall what exactly is the feeder effect? Just open up your video and speak. You can see now my application. Anyway, I will tell you the feeder effect means whatsoever you teach or feed to a kid in the childhood when he is 3 to 5 years old, that particular thing goes on till adolescence, then teenagers, and then beyond it, adulthood also, even up to my age, it will continue. And keep on marking your P today also. I will issue the certificate which are having 2 P's. Yesterday's webinar, today's webinar, you get certificate. और मेरे को पता है अभी भी मेरे पास 4-5 आएंगे सर, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पुणे वालों की मान सकता हूँ। कोई कहेगा कनेक्टिविटी नहीं थी, आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दैट, एक्सेप्ट अटेंडिंग वेबिनार आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. So now 5 steps, very quick, very fast, and it will take not more than 40-45 minutes. This is now 5 steps. क्या होते हैं? The first one is the particular SEL concept is clarified, explained to the class. This is the concept. And how it is done? It is done using audio, visual, audio visual aids, written tests, calligraphy,
anything under the sky which you think so, you will be able to communicate exactly what we are going to do. Then, for to gain deeper understanding of the concept, the students perform some practice. Let us say for example, एक फुटबॉल फील्ड में अभी कोच आपने देखा है सचिन तेंदुलकर, डू यू थिंक सो हमारी कम्युनिटी तो इतनी, द पीपल आर थैंकलेस फॉर आवर कम्युनिटी, है ना? बिकॉज आई टेल यू, यू टेल मी कि सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने में किसका हाथ था? हु वाज बिहाइंड इट? डू यू थिंक सो कि सचिन तेंदुलकर अपने आप प्रैक्टिस कर करके बन गया सचिन? नो, नेवर. But the thing is that our profession is so much thankless profession that nobody comes forward. COVID nikal gaya. Prime Minister even, I openly say, even Prime Minister didn't utter a word of appreciation कि what you people are doing. अगर gentleman कोई है यहाँ पर teacher, a male teacher, just ask them. They were put on duty for toll tax on the wine shops, and now also even still on yearly basis we are being put on election duties, survey duties. अभी आपका सर्वे हुआ, पॉपुलेशन सर्वे होगा, होने वाला है, चल रहा है. बट द थिंग इज कि इट इज ओनली बिहाइंड, वैसे कहेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, बस वो सिर्फ किताबों में बोलने के लिए, है ना? सिर्फ वहीं तक. नो एप्रिसिएशन फॉर दिस प्रोफेशन. आप अपनी मैनेजमेंट को देख लो. आई डोंट नो विच स्कूल यू आर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम यू पीपल आर. कोई भी आके किसी भी समय किसी भी टीचर को धमका देता है, प्रिंसिपल को आपके खिलाफ भड़का देगा. अरे शर्मा जी, वो सतेंद्र मैडम जो है, देखना जरा क्या कर रही है. मैं उल्टा उनके ऊपर गरजता था. मैंने कहा सर, यू आर ए ट्रस्टी एंड योर टास्क इज टू सी एंड लुक फॉर द मैनेजमेंट थिंग्स, not to look for the teacher's task and not to guide me at least. आप हैं क्या? I know that. वो जाके चेयरमैन से बोलते थे. मैंने कहा बोलो, क्योंकि मेरे को तो मेरा डेस्टिनेशन पता था ना. नेक्स्ट वन इज, अगर देखते हैं प्रैक्टिस के बाद भी कि इफ द टीचर सीज और देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, he revisits and reinforces that concept throughout the week. चलता रहेगा रिपीटेडली. जैसे हम हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, कंटिन्यू राइट 10 times. अभी now after revisiting for a week and the results are still not up to mark or my expectation as a teacher, what I will do, I will decide to reinforce that my teaching by setting homework, project work, task work to work with their parents. फिर अपने पापा से जाके पूछो. दिस मैं बहुत समझा चुकी हूँ, हो सकता है कि he will be able to make you understand in a better way. And then the last one is, the teacher will check for understanding moving forward, reaching specific points where they are required. ये checks जो है, it is not only for the assessment. ये assessment is not only for the evaluation. It is for the purpose of two things. Number one is वो है evaluation के लिए. Number two is feedback to me as a teacher and to a student as a learner. कि what exactly, how much I have taught, how much I made them understand the concept, and how much they really grasp. Now the next one is general approaches and practices. General approaches and practices to facilitate social and emotional learning in your classroom. First is create. That is, create a warm, safe, supportive environment in your class. वो learning environment होना चाहिए, supportive होना चाहिए. It should be safe. Next is develop positive relationship with the students. It is not like that कि they are learning under threat.
if I don't learn, the madam will reprimand me. If I don't learn, then madam will punish me. ऐसा नहीं होना चाहिए. Learning should take place in a free environment. In a free environment. That is fear free. Then allow opportunities for self-reflection. You have taught the thing, you have taught the concept. देख लिया आपने. Self evaluation के लिए उनको opportunity दीजिए to the kids. Yes, I have learned this much, ma'am. और वो फिर fearless होना चाहिए environment, learning environment, so that they can come again and again to you for the same concept. हाँ, वो दूसरी बार पहुंचता है तो आप डांटना शुरू कर दें. तुम्हें समझ में नहीं आता, मूर्ख हो, ये हो, वो हो, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट, वो उसका लर्निंग जीरो हो गया. ही विल नेवर कम टू यू अगेन. तो आपका पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या, आपकी टीचिंग का फायदा क्या? एंड व्हाट इज द फन ऑफ मी बीइंग इन दिस प्रोफेशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मैंने पढ़ाया, उसको समझ में नहीं आया, ही इज कमिंग बैक टू मी, आई एम टेलिंग हिम अगेन एंड स्टिल नो रिफ्लेक्शन. Then create opportunities for cooperative learning. अगर आपको मुझसे समझ में नहीं आ रहा, create some group task. अभी कैसे होंगे वो group task मैं आगे आपको बताता हूँ with examples in all subjects. Wherever you want, few examples I'll give, and then you can apply them in by your creative thinking. Next is attempt to establish an interactive dialogue. It should not be a one-way lecture. मैंने बोला बक 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 30 minutes. उसके बाद अपने आप ही वो कर रहे हैं. Whether they are understanding, they are not understanding, nobody is bothered about it. So that is not teaching, that is cheating. अभी इतना ये comprehensive क्यों हो गया हमारा evaluation? Because but people, the students, ये teachers earlier, they used to misuse the system. शक्ल देख के, okay, give him 2, give him 3, give him 5. अभी तो आपके पास सब ब्लैक एंड व्हाइट में रखना ही पड़ेगा. तो पहला ब्लैक एंड व्हाइट जो अपना आपके पास है, यू हैव टू क्लियर इट, क्लैरिफाई इट एंड प्रूव इट कि यस, आई हैव अटेंडेड द वेबिनार एंड आई हैव लर्नड. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. अब मेरे को तो साइंस में पढ़ाना है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, और बच्चे का इंटरेस्ट है ड्राइंग पेंटिंग की तरफ ज्यादा. तो ask him to draw or paint a digestive system. Beta, this is the diagram of digestive system in your book number, page number 19. Go back home and bring back a beautiful diagram or beautiful picture of what you understood about this, their experiences, their cultural heritage into the curriculum of your subject, your class. करिकुलम डिजाइनिंग आपके हाथ में होती है. वैसे तो जनरली अभी कंसेप्ट चल गया ना, करिकुलम डेवलप का भी वो प्रिंसिपल कमेटी बना देते हैं, कमेटीज के साथ एचओडीज के साथ सब्जेक्ट टीचर्स, और सब सब्जेक्ट टीचर्स वहां पे मीटिंग करते हैं. एक कोर कंसेप्ट है, सर जल्दी जाना है आज, मीटिंग खत्म करो. अच्छा भाई चलो ये चीज पे टिक करो, खत्म करो, हो गया करिकुलम. But when you are the master or you are in charge of your what you call a class, then nobody can interfere in your task. Nobody, you should not allow anybody. I will design my own curriculum my way. Then work to foster a growth mindset. Generally एक tendency क्या होती है कि the child, every child, you, me included, everybody was born with a fixed mindset. Now, what we started doing with their mindset, slowly and slowly, we started putting in their mind, you cannot do, you can do, you cannot do, you can do, you cannot do.
नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे को बोलो यू कांट डू, सी द नेक्स्ट टाइम ही विल नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट। और अगर आपने एक बार बोल दिया, आपने बॉर्नवीटा के 2-3 एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको एक जिक्र करता हूं। हार मान लेने से हार हो जाती है। असली हार कब होती है? जब आप हार जाते हैं। अभी एक लड़की कहती है कि क्या है आप ये बॉर्नवीटा बॉर्नवीटा, वो कप लेके जब उसकी माँ आती है, ये क्या फर्क पड़ रहा है इसका, कि कल आप कहाँ थी, वहां, आज यहाँ, कल कहाँ होंगी। गिव देम पॉजिटिव motivation to create a growth mindset. You can do it. You can do it. ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है। देन अगर आइंस्टीन को भी ये उसका मास्टर ने स्कूल से ना निकाला होता, हेड मास्टर ने, या सॉरी एडिसन ने, then certainly we would have been sitting in the dark. The only person was his mother. उसने बोला हेडमास्टर ने कि he is a duffer, can't do anything with him. जबकि उसकी मदर ने जब बोला कि यस योर हेडमास्टर टोल्ड मी कि यू आर सो मच इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट बी टॉट इन देयर स्कूल, सो नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल गाइड यू। देखिए दुनिया को क्या मिला। कीप बी गिविंग पॉजिटिव। आपको एक बात मैं बता दूं, 100% श्योर, यू गिव समथिंग नेगेटिव इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड, यू कैन नॉट डू। या कोई थप्पड़ लगा दो, गुस्सा कर दो, रिप्रिमांड हिम, यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट इन द लाइफ। लेकिन आज अगर आपने उसको बना दिया मोटिवेट करके, कुछ जिंदगी में वो बन गया, तो सर्टेनली आई एम 100% श्योर कि अगर वो सड़क के चौराहे पे भी मिलेगा बिग ऑफिसर, वो गाड़ी अपनी रोक के आपके पैर छुएगा, 100% श्योर, बिकॉज दिस इज द पर्सन हु हैज मेड माय लाइफ। एंड दिस आई एम नॉट टेलिंग जस्ट हियर से, देखा है मैंने अपनी आंखों से। So set high academic standards, and high academic standards doesn't mean 99%, 95%. No, आज मेरे 33% है, चलो बेटा next time in the next exam you will secure 40%. I am with you. Tell me what you can understand easily and what you cannot. If you cannot, come to me. We will set a goal of 40%. Next exam 50%. Next exam 60% के बाद 70%. You will see for yourself that way, if you create a growth mindset in the student, he himself will start doing the things. He will never require your help because you are with him only till class 12. After that, what will happen? His intrinsic motivation and the words of your motivation will drag him to the top position. So set high academic standards. Next one is जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। whenever it is possible, give them choices, give them choices कि मैम अगर मैं इस सवाल को, इस प्रॉब्लम को, if I solve this way, is it correct? Yes, try it at least. You just try and let us discuss it. Consider, अभी मैंने पहले भी बोला था, consider evaluation or assessment not only for the purpose of report card, but to be the feedback for the teacher as well as students to implement ongoing assessment, improvement, growth mindset, and then motivation. So use your assessment for that purpose. Then develop a balance between the lecture and active learning. जो आप पढ़ा रहे हैं, your teaching and their learning, there should be a total match between these two. और लर्निंग में इंडिविजुअल लर्निंग भी हो सकती है, इट कैन बी कोलैबोरेटिव लर्निंग आल्सो. इफ यू कांट लर्न योरसेल्फ, कोलैबोरेट विद योर फ्रेंड्स, sit with them,
learn with them. Now the next one is look for the ways to add emotional richness to the class content. मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है. Students learn and remember best when their emotions are engaged. Got it? मैं बताऊं इसका एक लाइव एग्जाम्पल. आर्मी ऑफिसर है. His son will always try to be an army officer. 99%. Why? Because they have been given that motivation, that mindset, discipline, number one, good perks, izzat, everything is attached with that. So certainly they will be going to earn. अभी क्लासरूम में लर्निंग के लिए you attach their emotions with that learning. How would you have done? SEL के questions में भी होता है. What would be your first priority if you were made Prime Minister of India? Jot down 5 points, 5 priorities you would go for. And then वो उनकी उसी से आपको पता चलेगा कि how he is emotionally attached to the concept. Next one is teach students to identify their emotions. How to identify your emotions? कैसे? मैं अभी आपको आगे भी बताता हूँ, पहले भी बताया है. Some favorite social emotional activities. ये एक्टिविटीज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको फ्रॉम प्री स्कूल और किंडरगार्टन टिल हाई स्कूल. बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे. 5 minutes on one section will give you a broad eye view as to how you can utilize these examples. Creative thinking आपकी अपनी होनी चाहिए. There can never be limited number of examples. Examples can be limited, but there can never be limited number of opportunities. Now, see first. Kindergarten में हम लोग जब प्री नर्सरी में पढ़ाते हैं, we just go only for the activity. We don't go for. अभी तो कंसेप्ट ही चेंज हो गया है. अभी तो एलकेजी यूकेजी वालों के हाथ में भी पेन पेंसिल पकड़ा दिया जाता है एंड दे स्टार्ट राइटिंग. Try, read. There are tons and tons of children's books in the magazine and magazines, books, comic strips. अब कौन कौन सी है वो एग्जाम्पल? पहले तो एक देखिए आप शुरुआत कहाँ से करनी है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट. रीड आउट द पर्टिकुलर स्टोरी. छोटी स्टोरी लीजिए, स्मॉल स्टोरी, where you can speak out slowly for 10 minutes. Then reading about characters they can relate to. That means teaching socio-emotional skills means they can attach themselves to a particular this thing situation. और मोगरी का क्या फील कर रहा? जंगल बुक. That is the best example of emotions. Socio-emotional skills. What he learned? He learned to hunt like a tiger, to hop from one tree to another like monkeys, like drinking water from ponds or lakes like horses. Example can be taken from children's book like Jungle Book. देखिए सबसे पहले ही लिखा है टार्जन. अभी आपने पूछा, बच्चे से ही पूछा कि वो टार्जन कैसे आवाज निकालता था when he used to jump from across from one tree to another one. How he used to shout, what sound he used to make. Similarly, a number of other things are there. Also make them available books on bravery, kindness. ये तो emotional skills है ना. Mannerism.
एटिकेट्स, फ्रेंडशिप, काइंडनेस क्या होती है, ग्रेटिट्यूड, टुगेदरनेस, व्हाट इज फैमिली. These type of concepts can be taught by reading, reading and reading. Then sing. With the emotional expressions on your face. Johnny, Johnny, yes, Papa. So what exactly you make faces with the different emotions like smiling, laughing, joyful, surprise, anger, sad, fearful, scary. अब बच्चों से ही पूछिए कि बेटा जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कैसे क्या फेस बनाओ, कैसे करते हो, क्या करते हो आप. तो बच्चा करेगा ऐसे करता हूँ. हम छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं जो स्कूल भी नहीं जाना शुरू होते हैं. वी जस्ट ट्राई टू टीच देम. मेरा बेबी गुस्सा हो करके दिखाओ मौसी को. और बच्चा करेगा एंड वी ऑल स्टार्ट लाफिंग because we are teaching them this skill. We are teaching them to attach a particular reflection of features, the facial expressions, the features with their emotion. बेटा हंस के दिखाओ तो बेबी जो है वो हंस देता है. So this way you also as teacher try to sing. अभी हम केजी नर्सरी में पढ़ाते हैं मछली जल की रानी है with expressions, with hands first. And similarly hundreds and hundreds of poems are there. थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए. नॉट डोंट डिपेंड अपॉन द वेबिनार्स. ये तो चलना ही पड़ेगा, अब तो चलेगा सारी जिंदगी. आप 60 साल के होने वाले होंगे रिटायरमेंट से 2 महीने पहले. आपके 5 वेबिनार रह गए, 5 घंटे रह गए. तो रिटायरमेंट में आपका कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी, तो वहां तक चलेगा. बट ऑन द डेली बेसिस एटलीस्ट स्पेंड हाफ एन आवर फॉर योर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ. जहां पे किसी कोई एक्सटर्नल हेल्प और एड की जरूरत ना हो. मेरे को टुमारो आई हैव टू गो फॉर टीचिंग फोर्ट्स और क्रॉप रोटेशन. व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? कैसे पढ़ाऊं, कौन सी एक्टिविटी लेके आऊं? ट्राई टू इनोवेट योरसेल्फ. गाजर, मूली, मटर, पालक ले जाइए एक एक दो दो पत्ते, क्लास में दिखाइए. एंड देन भिंडी, कॉलीफ्लावर ले जाइए एंड देन शो देम कि which vegetable is attached to which season. This way you can create yourself. Next one is make emotion mask. That is a great tool for talking about the feelings. जैसे अभी आप देखते हैं मोबाइल में इमोजीज. There are a number of emojis. One drop of tear falling from the right eye. The person is sad. 2 eyes and whole teeth looking means shown outside. There is a circle on the head of an emoji. So the activity will focus on emotions like I am happy. पेपर प्लेट लीजिए, कहीं भी मिल जाती है. कट देम इनटू हाफ. और वो हाफ में करने के बाद टॉप वाला जो फ्लैट पोर्शन बचा है यहाँ पर एक वन आई, अनदर आई. यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, whether it is smiling, straight, downwards, or whatsoever the expression you want to. Show them. This is happy, this is mad, this is sad, this is silly, he is crying, and so on and so forth. Now, once they correctly identify the emotion, have them use the marker to draw the face on one of the plates.
अभी आपने प्लेट पे दिखाया है, अब बच्चों को दीजिए कि नाउ यू डू, बेटा आप इसके ऊपर सैड का बना के दिखाओ। तो वो क्या करेगा, गोल गोल आंखें बना देगा, एक आंख के नीचे एक आंसू बना देगा, हम उसको आंसू की तरह आइडेंटिफाई करेंगे, बट द चाइल्ड्स माइंड इज वर्किंग ऑन सम अदर डायमेंशन, so that way make emotion mask. Next one is use, help your students focus on present moment. ये this is mindfulness, जैसे ऑन द लाइंस एज डिस्कस अभी पीछे हमने किया है, नेचर वॉक, लेट देम गो फॉर दैट एंड आस्क देम, बेटा कैसा लग रहा है, पार्क में ले जाइए, नेचर वॉक के लिए पार्क में ले जाइए, आर्ट क्लास में देखिए, गेम, लेट देम प्ले विद वाटर, लेट देम प्ले विद फ्रेंड, फिंगर ट्रेसिंग, हैंड ट्रेसिंग, प्ले इन सैंड, ब्लो बबल्स, कैच बबल्स, shadow art, thread painting, number of things are there, number of things are there. ये स्लाइड्स आपको ये मिलेंगी रिकॉर्डिंग, फ्रॉम हियर यू कैन टेक द आइडियाज फर्दर अगेन and then create something new. Next is for elementary school, 4 5 things are there only, not much. Yes, positive self-talk, ask your student to say one positive thing about themselves to stimulate self-awareness. अभी मैं इसको अभी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जर्नल राइटिंग भी होता है, एंड ऑफ द डे इमोशनल सोशल इमोशनल सेल स्किल्स के लिए एंड ऑफ द डे के लिए क्या करते हैं, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 10 seconds, आई विल हैव अ sip of water. Ask them what one positive thing you have done today in school, in the class, while on the road, while playing with your friends, in the games field, wherever you have done, just mention it. For example, he may write, I help my mother in cleaning dishes. I completed my homework in time. So that way you can bolster their social emotional skills. Next is group debates. Divide them into 2 groups and ask them which one is better. Give them a special topic and then ask them for this particular topic, which emotion is right, and the second team will find out, write down, jot down which emotion is wrong emotion. When someone is hurt, what would you do? Laugh, smile, clap, help, run, shout for the help, run for the help yourself. Group debate करिए, जो elementary classes में तो these are simple words, the action words are called verbs, और ये verbs आपको उनको देने हैं, and this is what we do all life with the students. Ask one of the group to list all right things, another one to do all wrong things under particular situation, and you will come up with the beautiful results. Yes, they can now think beyond their limits. Next is hobby bingo. Hobby bingo क्या है कि this is basically for the purpose of building a relationship through SEL. Now ask the students to write their hobbies on piece of paper, on different cue cards. पेपर कर दीजिए, मैं कार्ड वार्ड जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, बिकॉज दे आर कॉस्टली. हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो पेरेंट्स की पॉकेट के ऊपर बर्डन डाले, चाहे वो 2 रुपए का हो. वाई शुड वी पुट बर्डन पेपर के ऊपर? बेटा यू डू दिस थिंग on this particular paper. What is your hobby? Right. Then raise them one by one. Me as Ajay Sharma, मैंने बड़ा बड़ा उसमें लिखा पेंटिंग. I will raise it.
and then everybody will see and they will match and make a group. This is hobby bingo. So they this way can attach themselves emotionally with their classmates who have got similar type of hobby in the classroom. The next one is what journal writing. मैंने आपको पहले बताया journal writing में the best part is that it should be done at the end of the day. अभी आपको ये बताते जा रहे हैं these all things. Journal writing जो है, it is an activity that can be held in the last 10 minutes of the school day. What good thing you have done in the day, what not so good thing you have done in the day. अब आप कहेंगे कि वो क्यों लिखेगा not so good? He will write because you have to tell one particular quality or aspect of humanity or human being. Be truthful. So he will write, I have not finished my lunch. Now bring a quote to your class. वो पहनने वाला कोट नहीं, ये QUOTE. Those which have been written by the people, the human beings. And ask, read them aloud, speak them aloud, and ask the child or children in your class to attach that particular quote with the emotion to stimulate critical thinking. हो जाएगा. The one who wins is the one who thinks he can. किसने कहा छोड़ो मारो गोली, उसको समझाओ कि इसका मतलब क्या है. अमिताभ बच्चन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And then ask the students to attach an emotion. Under what circumstances he would have said that. Organize a class party. This is basically a relationship building SL. This is a relationship building SEL. How? Blow off some steam and organizing a class party for the purpose of creating relations between teammates, socializing in a celebratory environment. आज हम केक पार्टी करेंगे. आज हम क्या करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पार्टी करेंगे. आज हम लंच पार्टी करेंगे. सो वी विल एक्सचेंज लंच विद आवर हॉबी मेट्स, कह लो क्लासमेट्स, बोल लो फ्रेंड्स, एंड वी विल हैव अ पार्टी once in a month. 2 period की पार्टी, नॉट अ बिग डील. नाउ हाई स्कूल इज, दिस इज द लास्ट वन. मैं 3 ही बताऊंगा इसमें, बाकी आपको अपने आप आइडियाज आते जाएंगे दिमाग में. मेडिटेशन. This is the perfect SEL activity. Why? Because raising teenagers want some space to relax. They want some space to relax and connect with community. उसके लिए उनको peace of mind is must. Meditation, or meditation can be done in a number of ways. Mindful breathing is also one of the way of meditation. Yoga, running, cycling, swimming, which means you concentrate your mind on that particular activity, that is meditation. And once a person is trained to attach himself with this type of activities, then certainly they will be rather very happy to go for meditation. एक हफ्ते में, एक वीक में एक क्लास ऐसी जरूर करवाइए. Number 2, talk with strangers on the daily basis. You motivate them to talk to the strangers. Now that stranger can be a rickshaw puller, can be bus driver, bus bhaiya, can be another class teacher, can be another teacher who is not teaching his class.
Anybody can be his senior student, junior student, group D staff. अपने पड़ोस में किसी से बात करके आओ, and then let us discuss what exactly at least you have class to at least talk to a stranger every day. How to talk. और यही तो social emotional attachment. Throughout the life, you will be meeting new people every day on the daily basis. So if you don't have any social emotional skill in you, you will be feeling shy to interact with the people and then develop these relations. अभी हमने देखा कि पिछले 5-7 सालों में कि the young generation just hopping from one job to another, another to another, another to another. भैया 7 years and this is your 4th job. क्या हो रहा है? अरे मन नहीं करता यार, मन नहीं करता क्यों? Because they have not been trained to create such type of relations. ये आप कर सकते हैं उनके साथ. Talk with strangers. Right now you start. Ask them to go to the principal's room because they don't have frequent intervention or frequent talk or interaction with the principal. Ask them to go and start. करो, करके लेके आओ. Artistic expression of your feelings, because every art has its own emotion. Say for example, Kathak and Kuchipudi. Dance form is different, but if you see their facial expressions, there will be facial expressions more or less of same way they express in Kuchipudi, and then in Carnatic music, and then in Kathak. You will have similar type of expressions on the face. All right, ladies and gentlemen. So over here, we finish this one. If you have got any doubts, any ideas or suggestions, please talk to me. You have got my number, or you can write your problem. The next webinar will be on etiquettes and mannerism. That is 13th. I will post the promotional ad in the group, and now I will stop sharing this screen. If anybody has got any doubt or suggestions what we have discussed till now, you can come up and let us discuss now. If you have got any question also, we can have. Those who are present over here, 10 guys, please mark your presence in the chat box by writing P. देखिए ना आप, there were supposed to be 35. They were supposed to be 35 teachers, and you can yourself can see there are 14. So you will get only 14, only will get. Let me, next time in the next webinar on 13th, etiquettes and mannerism, over there I will let you know the different reasons I have accumulated why you were not present in the webinar. So if you have got any doubts, suggestions or ideas, please come up. Otherwise, I will stop sharing and even mark P also. So please mark P. वैसे तो मेरे को पता चल रहा है. Even if you don't mark, because somebody here or there have written this or that, but mark कर देंगे तो अच्छा रहेगा. Just giving you 30 seconds. Mark P, निर्मल जी. मार्क पी इन द चैट बॉक्स. वैसे तो मैं आपको देख रहा हूँ. पूजा भंडारी जी ने कर दिया, फरद सुल्ताना जी ने कर दिया. अब ये बात जो मैंने बीच में बोल दी पी लिखने के लिए, आगे की वेबिनार से मैं लिखूंगा इसको उसी समय, when I will just note down the time and then I will see कि within 10 seconds you write P.
and that time I will note. And then from your P, what time it was written in the chat box, I will write and issue the certificates. Otherwise, no certificate. आप जाइए ना 500 600 1000 रुपए की होती है वेबिनार्स, करिए उनको अटेंड, वो दे देंगे, वो देंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू. क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं ना महंगा अच्छा है, तो महंगा अच्छा है तो लीजिए उसको, क्योंकि वहां पे आपको अगर मिल जाता है बिना मेहनत करे कोई चीज, तो हाउ मच इजी इट कैन बी फॉर एवरीबडी. All right, ladies and gentlemen, there is nobody else to write anything. I end up over here and have a good dinner and nice sleep.